Hello, Assalamualaikum friends. I am Hussein Lagari, and we are here for your English class. And today's class topic is Prisoner of Zenda. You know, we have studied it on our first year and level. So I am gonna ask Miss Shameela to start her lecture. Miss Shameela, are you there? Can we start now? Yes, sir. Let's start. All right. Assalamu alaikum, everyone else. And I hope so that everybody is fine by the grace of Allah Almighty. As you have seen the heading on your screen that the prisoner of Zenda. So we are going to start this book, The Prisoner of Zenda. And then you do remember that this is just a novel and a novel which is based on a plot. If there isn't any plot, so which means the purpose of a novel is failed. All right, so here we are going to discuss chapter number 1, the Razendals with the word and albergs. So we are going to discuss about it. Yes, next. Rudolph Razendal's sister-in-law Rose urges him to do something useful with his life. Lord Bursland, Razendale's brother, tells Razendale that he has found him a job as an attaché to Sir Jacob Barodile. As the job will only start in 6 months, Razendale decides to attend the coronation of King Rudolph V, which is to take place in Streltsov, Ruritania. Actually, main motive क्या है यहाँ पे? Rudolph Razendale जो है, he was totally first of all I want to tell you that he is living with sister-in-law and his brother. ठीक है? But on the other hand, he just continuously living over there, eating over there, and then spend the time. He is totally depend on his brother. अब जब ब्रदर पे या भाभी पे वो डिपेंड कर रहा है तो व्हाट इज द कंडीशन इज ओवर देयर के उसका जो भाई है और उसकी जो भाभी है दे डिडंट लाइक दैट ही इज लिविंग ओवर देयर इवन दो दे आर नॉट बॉदरिंग दैट ही इज लिविंग ओवर देयर वो चाहते हैं कि रहने के साथ साथ ये यहाँ पे कोई काम भी करे ऑन दी अदर हैंड जो Razendale है उसकी ये कंडीशन है कि ही वाज जस्ट मेकिंग अ लेम एक्सक्यूजेस टू देम दैट हाँ मैं काम करूंगा हाँ मैं जाऊंगा देन आई नीड सम टाइम and then he was just saying that I will have to go somewhere else for the purpose of मतलब घूमने फिरने में जाऊंगा और मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके बावजूद जब उसके भाई या भाभी उससे ज्यादा बहस करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं पहले कोरोनेशन में जाऊंगा किंग रुडोल्फ के और उसके बाद जो है मैं जो है ना देन आई विल फाइंड आउट दैट व्हाट आई विल हैव टू डू नेक्स्ट Then the argument is going on. You will see Razendale's sister-in-law comments or his doing nothing. उसको मालूम है कि ये सिर्फ बोलता है ये करेगा कुछ नहीं वो continuously argue कर रही है उनसे and then I wonder when in the world you are going to do anything. She mentions his age. You are 9 and 20 and you have done nothing. But Robert mentioned two Alberg features in Razendale's red hair. Generally cropped out once in a generation, so does the long nose. Rudolph has got them both. Razendale says to Rose, when I do a thing, I don't do it by half. अब यहाँ पे ये क्या resemble कर रहे हैं कि on the other hand they are talking about the England there is one more Razendale and he was having the same resemblance किसकी है वहाँ पे इन दोनों के जो hairs हैं वो red हैं दोनों के कलर के जो दोनों के बालों के जो कलर हैं वो दोनों के रेड हैं और यहाँ पे वो उसे जब मेंशन कर रही है दैट यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग एल्स यू आर जस्ट टेलिंग टू मी एंड देन यू विल डू वो कौन सा दिन आएगा जब तुम कुछ करके दिखाओगे सो दैट ही वाज टेलिंग दैट she was also just mentioning the age of his that is 29 years old basically he was 29 years old and then if I will talk about the height as well so 6.2 height and even though he was a good boy but there is a fluctuation in the nose. Rudolph has got them both. Razendale says to Rose, वो अपनी भाभी से क्या कहता है? When I do a nothing, I don't do it by halves. के मतलब मैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं जो भी करूंगा मैं बराबर से ही करूंगा.
अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करके रखनी है कि ये जो हमने रूरोटेनिया की बात करी है, किंग्स ऑफ रूरोटेनिया, तो यहाँ पे हम दो की बात करेंगे, एक है रुडोल्फ एल्बर्ग वन और दूसरी है रुडोल्फ एल्बर्ग टू। और यहाँ पे अभी हम लेडी इमेलिया की बात करने जा रहे हैं, तो वहां पे भी क्या होगा कि दैट शी वॉज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रेडल्फ एल्बर्ग टू। जब भी मैं बात करूंगी आई विल टॉक अबाउट रेडल्फ एल्बर्ग टू, सो विच मीन्स दैट लेडी इमेलिया इज interested in him. Okay, next. Unlike his usual practice, he tells his relative, the itinerary. I was going for a ramble in the Tyrol and I intended to study the political and social problem of the interesting community which develops in the neighborhood. Rezendile's reply to writing a book on her insistence, no, I won't promise, but if I find enough material, I will. यहाँ पे फिर उसके lame excuses चल रहे हैं that if I have got the limited material or the enough material, so that I will do. Even वो ये bother नहीं कर रहा कि now my brother is supporting to me, so that by the help of my brother I should do something. ऐसा उसका कोई जहन ही नहीं है, बल्कि वो मत टालने के लिए कोई ना कोई बात ऐसी कर देता है कि जो कि मतलब उसकी भाभी को नाखुशगवार गुजरती है। इसमें मजीद ऐड करती चलूं कि आइदर ऐसा नहीं है कि वो कोई वेल एजुकेटेड नहीं है, वो वेल एजुकेटेड भी है। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच एंड जर्मन। वो एक शॉर्ट मैन भी है, and there are many more qualities, but the reason behind it that he doesn't want to do the anything else. On the other hand, अगर हम ये जो लेडी एमेलिया है इसका मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते ही चलूं, that she was the illegal child by lady Amelia Resendale. ठीक है, he was the child of the lady Amelia which was illegal. Okay, now next. On the other hand, whatever we have discussed, they are very easy question which I have written over here so that you do remember the answers regarding the chapter number 1, and then we are going to discuss about the chapter number 2. So here, what was the name of Rezendile's sister-in-law as she was discussing? So the name is very easy, Helga Flavia Rose Antonetti. So Rose answer is absolutely correct because she continuously argued regarding that you should do anything else in your life. Next. Number 2 is written, what was the name of Rezendile's brother? G. What we have discussed. Bertram, Robert, George, or Jan? What will be the answer? His brother name is Robert. Do remember. And now next. Next. Number 3. Which of the following Robert did not consider important when marrying Rose? ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी मतलब कंसीडर करता है इंपॉर्टेंट पार्ट when marrying Rose? A. She is pretty. B. She is accomplished. She possessed a large fortune. Her family is hardly of the same standing as the Rezendiles. So very easy answer. अगर आप ऑप्शंस में ही देखेंगे तो बिल्कुल उसकी जो फैमिली है वो somehow stand करती है Rezendiles फैमिली से. So that's why he has married. Next. Good families are generally worse than any others. What is Rose referring to? So Rezendile's disinterest in all occupation, Rezendile's Alberg ancestry, Rezendile's love for travel, Rezendile's aristocratic mentality. अब यहाँ पे गुड फैमिलीज की बात हो रही है जर्नली, जो कि इन्होंने बताया कि वर्स होती हैं देन एनी अदर. व्हाट इज द रोज रेफरिंग टू? सो रेजेंडाइल डिसइंटरेस्ट इन ऑल ऑक्यूपेशन, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइदर what is generally worse in a family, he has to do the work according to him. Next. Which of the following is not Rezendile's usual practice? A. To furnish his relative with an
itinerary, B. To visit different countries, C. To finish the work he has started, D. To promise to do what he intends. So that the first answer is correct, to furnish his relative with an itinerary. Now we are going to start chapter number 2. In chapter number 2, we will also discuss the place of Ruritania, which is the imaginary country in Europe. And then Zenda. Zenda is also the place next. Zenda is also the place name, state name, where you do remember the, yes, concerning the color of men's hair. Here we will discuss more about the hairs, as I have told you that Resendiles has resemble with the red hair. Okay, but both of them are not living in the same country. They are living in a different country. But the time will come when they have met with each other. Okay, so next. Okay, we are discussing about Rudolph. Rudolph Resendale, who shares a common ancestor with the king of Ruritania. Ruritania में फिर बेटा आप लोगों को बताती चलो कि this is the imaginary country in Europe. Okay, तस्वुर किया जाता था कि यूरोप में एक मतलब कंट्री है that is name of Ruritania, जबकि ऐसा कुछ नहीं था. And Zenda, I have also told you, it is the name of a place. And if I will talk about the Stirlesu, that is the capital city, right? So ancestor with the king of Ruritania, an imaginary country in Central Europe, visited Ruritania for the first time with the intention of seeing the new king's coronation. He meets his friend George in Paris. अब यहाँ पे जब कोरोनेशन होती है तो कोरोनेशन के दौरान ये किससे मिलता है? अपने फ्रेंड से, whose name is George. कहाँ मिलता है? In Paris. George tells him about Antonity the Mobbin, who is also traveling to Rorotania. अच्छा, जॉर्ज इसको किससे मिलवाता है? एंटोनिटी से, जो कि खुद क्या है, ट्रेवलिंग कर रहा है रोरोटेनिया पे ऑन द सेम ट्रेन. He has let his acquaintances in London and Paris know only that he is to visit Dresden and Tyrol. At the frontier, he learns that the coronation is to take place unexpectedly soon, in 2 days' time, because it appears that accommodation will be difficult to secure at Stralesu, the capital city. He decides to stay at Zenda, a small town 10 miles from the frontier and 50 from the capital. जब इन्होंने ट्रस्ट ही नहीं करना होता कि वेयर दे विल हैव टू स्टे, तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जेंडा एक प्लेस है जहाँ ये, इसको स्टेट भी कह सकते हैं, प्लेस है जहाँ पे ये अपना अकोमोडेशन वगैरह का अरेंजमेंट इन्होंने करना होता है. स्टेरलिस, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, के कैपिटल सिटी है. And then they will have decided to stay over there in a place of Zenda. वहाँ पे कोई एक छोटा सा टाउन है, tiles miles from the frontier and 50 from the capital. So that finally they have taken the decision to live over there. रुडोल्फ के बारे में फिर बताती चलो. रुडोल्फ एल्बर्ट जो 5 है, that can be crowned by mistakenly. Next. Okay, evening at the hotel in Zenda, he learns that King is resting at a nearby shooting lodge on the estate of Michael Duke. अब यहाँ पे एक और नया कैरेक्टर आया है हमारे पास, माइकल ड्यूक. सो यहाँ पे जो है, अगर हम इसे ब्लैक माइकल भी कहते हैं, यहाँ पे जो है माइकल वो विलन का रोल जो है वो अदा कर रहा है. ठीक है. और रोरोटेनिया में जो है, मतलब रोरोटेनिया से ही आया है. एंड दिस इज द सेकंड सन, Michael Duke of the Strelitzu, the king's half brother, to whom belongs the great castle of Zenda. He also learns that the Duke is far more popular than the new king, who has spent most of his life abroad. The king and the Duke are both said to wish to marry Princess Flavia. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंसेस फ्लेविया की. प्रिंसेस फ्लेविया मैं आपको बताता चलूं, ये जो है ये फर्स्ट कजन है प्रिंस की
और उसकी फियांसी भी है। प्रिंसेस फ्लेविया जो है वो कजन है प्रिंस की और उसकी फियांसी भी है, राइट। The king and the duke are both said to wish to marry Princess Flavia, the king's cousin. Next. Okay, Rosendale quote his uncle William, no man should pass through Paris without spending 4 and 20 hours there. यानी कि जब तक कोई इतने आवर्स स्पेंड नहीं कर लेगा, they will not supposed to be moved to Paris. In Paris, Rosendale and George meet Bertrand, who was a versifier of some repute and Paris correspondent to the critic. अब यहाँ पे ये किससे जाके मिल रहा है? जंडाल एंड जॉर्ज मीच बर्ट्रैंड हु वाज, वो कौन है? वर्सिफायर है, रिपोर्ट एंड पेरिस correspondence to the critic. All the time he was just tell that where they should have to move and where they don't. George tells Bertrand about Madame de Morban that she flies higher than the paper trade, my boy. यानी कि हर वक्त वो ख्यालात में ही रहती है और हर वक्त उसे ऐसा लगता है कि शी इज गोइंग टू डू, बट कि ऐसा नहीं है। इन रियलिटी दैट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है? थ्रू जॉर्ज रेजेंडाइल लर्न्स द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द मॉर्बन एंड द माइकल अबाउट मैडम द मॉर्बन। शी वाज अ विडो, रिच, हैंडसम एंड अकॉर्डिंग टू रिप्यूट एम्बिशियस। उसके बारे में क्या बताते हैं कि वो जो है एक बेवा औरत है, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर है, हैंडसम भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ एम्बिशियस भी है विच शी वांट्स टू फुलफिल। अब वो कैसे फुलफिल करेगी? लेट वी सी। नेक्स्ट। यहाँ पे हम ड्यूक माइकल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते चले। द ड्यूक वाज द सन ऑफ द लेट किंग ऑफ रूरुटेनिया बाय द सेकंड and morganatic marriage and half brother to the new king. He had been his father's favorite. He had been created a duke with a title derived from no less a city than the capital itself. यानी कि वो जो जायदाद है उसका मालिक आधा ये भी है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली दे वर लिविंग सेपरेटली, सो दे डोंट नो अबाउट इट, बट दैट इज द रीजन कि फिर वो उसका अगेंस्ट हो जाता है। फिर प्रिंसेस जो है हमारे पास, प्रिंसेस फ्लेविया जो है, इसका भी रोल है, सो दैट ही इज टोटली अगेंस्ट ऑफ देम। उसके लिए ये क्या क्या करता है वो फिर देखते हैं कि किस टाइम पे ये लेकर आता है। उस जिंदा प्लेन्स में उसको जो है वो कैदी बना देता है। तो ये एक अलग कहानी है। मैं एक दफा फिर रोडोल्फ रेजेंडाइल को रिपीट करती चलूंगी। ये इसे क्लासिकल हीरो कहा जाता है और 29 years ओल्ड है ये, एंड 6.2 इसकी हाइट है। ही इज वेल एजुकेटेड और ही कैन स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एज वेल एज जर्मन। शॉर्टमैन भी है ये, इसके मार्क्स भी लगा हुआ है, तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड ए मार्क्समैन। और इसके अलावा जो है ये एडवेंचरस भी है, ये डरता किसी से भी नहीं है, और जो ये ठान लेता है कि मुझे जाना है या मुझे करना है, ये वही काम करता है। एंड ही वाज हैविंग द रेड हेयर, लॉन्ग नोज, ये आपको पता है रिजेम्बलेंस में आ रही है, एंड ब्लू आईज, स्पेशली द रेड हेयर्स, जो कि इसका जो रोडोल्फ, हमने रोडोल्फ एल्बर्ग 2 की बात की है, ही इज आल्सो हैविंग द सिमिलर हेयर। ऑल राइट। और ये दोनों कौन है? किंग्स ऑफ रूरुटेनिया है, एल्बर्ग, रोडोल्फ 1 एंड रोडोल्फ 2। नेक्स्ट। और ड्यूक ब्लैक माइकल के बारे में एक और चीज बताऊं कि ये जो है एंटागोनिस्ट है, और ये क्या करता है? गवर्नर है, किसका है? स्टेलिसो का स्टेप ब्रदर है प्रिंस का, और एन इशू ऑफ मॉर्गेनिक मैरिज, और इसको मतलब इशू ही रहता है मॉर्गेनिक मैरिज में, मीन्स इंटरनली मैरिज। अब यहाँ पे जॉर्ज की क्या बात कर रहे हैं कि George hints that Rosendahl's ancestry, royal attentions are hard to resist. You know that, don't you, Rudolph? आपको पता है कि यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं रॉयल फैमिलीज के, और इसके लिए जो है यू शुड हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन strictly. So Rosendahl sees Madam at the booking office. She was perhaps a year or two over
30, tall, dark, and the rather full figure. यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं कि ये जो है ईयर और 2 ईयर 30 टॉल डार्क, ये डार्क कॉम्प्लेक्शन है, एंड द रादर फुल फिगर, और इसकी जो है मतलब फिगर जो है शी इज नॉट, वी कैन से दैट अ कंप्लीट वन. नेक्स्ट. George's perception, prediction that Rosendale might have to help Antoinette come Steru later the novel. Never mind, old fellow, perhaps there will be a smash and you will have a chance to rescuing her and cutting out the Duke of Stralesso. The old officer at the custom house looks at Rosendale with astonishment. I felt surer than before of my Albert physiognomy. अब आपको पता है ये वहां पे चला जाता है, ट्रेवल में साथ होते हैं, जेंडा एक प्लेस है वहां पे इन्होंने स्टे किया हुआ होता है, और ऑब्वियसली इन्होंने वहां से मूव करना होता है क्योंकि इन्होंने क्राउन जो है वो होता है कि मतलब क्राउन सेरेमनी होती है, कैसे वहां पे फीस्टिंग में इन्होंने शिरकत करनी होती है. So that वो क्या कहता है अपने old fellow से, that there will be a smash and you will have a chance to securing her and cutting the Duke of Strelisso, कि अगर तुम मतलब कुछ भी करना चाहते हो तो तुम इजीली कर सकती हो. तो वो जो ओल्ड ऑफिसर होता है द कस्टम ऑफ हाउस लुक एट रेजेंडाइल, रेजेंडाइल की तरफ हैरान होकर देखता है, एंड आई फेल्ट श्योरर देन बिफोर माई एल्बर्ट फिजियोगोमी, और वो कहता है कि मुझे ये श्योरिटी है इससे पहले कि मतलब कोई आ जाए दैट यू शुड हैव टू मूव. अच्छा, इसमें जो करेक्टर आ जाते हैं यहाँ पे, ये ड्रेजन जर्मनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड देन जो ब्लैक माइकल है यहाँ पे बाय मोरगेटनिक मैरिज, जो ब्लैक माइकल है वो इसको हम क्या कह सकते हैं, मोरगेटनिक मैरिज एज वेल, और इसके जो हेयर्स हैं वो ब्लैक ही हैं, इसके हेयर्स रेड नहीं है. नेक्स्ट. अब रेजेंडेल डिस्क्राइब्स द लैंडलेडी एंड हर डॉटर इन द फॉलोइंग टर्म्स. कैसे रेजेंडेल जो है डिस्क्राइब कर रहा है लैंडलेडी को एंड उसकी डॉटर को. दे वर गुड क्वाइट पीपल एंड सीम्ड वेरी लिटिल इंटरेस्टेड इन द ग्रेट डूइंग स्टरलेसू. यानी कि मतलब just they were looking like very attractive, they are a very quiet people, and then they are just little interested in a great doing Sterleso, yani ke they are not having any interest in Sterleso, and they are also do whatever they want, and then they are not having any focus either. They are having the large amount of money, they belongs to a rich family, but it doesn't mean that they have come for any purpose, they didn't come. Next. The old lady at the inn talks about Michael and Rodolphe. 5. About Michael. We know Duke Michael, he has always lived among us. Every Ruritania knows Duke Michael. About Rodolphe. 5. But the king is almost a stranger. He has been so much abroad, not 1 in 10 knows him even by sight. अब यहाँ पे जो ओल्ड लेडी है वो जो इनमें है वो शी वॉज टॉकिंग अबाउट द माइकल और रोडोल्फ की वो बात कर रही है, और अबाउट माइकल वो क्या कहती है, वी नो ड्यूक माइकल ही हैज ऑलवेज लिव्ड अमंग अस, यानी कि अगर वो नहीं भी है तो स्टिल ही वाज लिविंग विद देम, एंड एवरी रोरोटेनियन नोज, और रोरोटेनिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं एवरीबडी नोज अबाउट माइकल. एंड माइकल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ही इज द विलन. एंड देन अबाउट रोडोल्फ 5 के बारे में क्या कहती है, बट द किंग इज ऑलमोस्ट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर होते किंग ऑलवेज, he has been so much abroad, not 1 in 10 knows him even one side. ठीक है. Okay, she was the one-sided and she was not in favor of the king and she was just against it, and she was not that happy with the crowning that the Michael Rudolph Rosendale can be crowning. Next. अब क्या होता है, while talking to Rosendale, the old lady expresses her wishes. अब उसकी wishes क्या हैं? I wish he would stay at his shooting and suffer our duke to be crowned on Wednesday. कि यानी कि they wanted to stay over there and then she want that के shooting का time जो भी हो उसके साथ spend हो, and she wanted also to see the crown on Wednesday, means she has telling the day that when the crown
ceremony will be held. She expresses her opinion openly because she believes there is many to think as I do. क्यों वो इतनी easily इन लोगों से बात कर रही है? The reason behind it that she is thinking that whatever I am thinking about anything else, so that the other people, not other people, but majority of the people are also thinking about that. So that's why she has told everything about it. Next. Rosendella also learns the reason why the king is at Zenda. हाँ yes, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि Zenda में वो क्यों है और रीजन यहाँ पे पता होना चाहिए. The Duke actually invited him, sir, to rest here till Wednesday, कि ताकि वो वहां पे आराम करे और फिर उसके बाद ये लोग कोरोनेशन सेरेमनी में जा सकें साथ. The Duke is as the Streliso preparing the king's reception. अच्छा, ड्यूक का क्या कर रहा है स्ट्रेलिसो में? वो मतलब प्रिपरेशन कर रहा है क्राउनिंग की, किंग्स के रिसेप्शन पे, कि जो भी चीजें वहां पे रिक्वायर्ड है फीस्टिंग के रिगार्डिंग, डांसिंग के रिगार्डिंग और फ्लावरिंग डेकोरेशन, वट एवर द थिंग्स हैव बीन रिक्वायर्ड, so the things can be fulfilled by the Duke Michael at the place of Streliso. He was the king's receptions. Over there, he was performing his duty. Next. One of the two daughters of the old lady comments on the nature of relation between the king and the duke. अब यहाँ पे जो उसकी बेटियां हैं, one of them is talking about that कि किंग का और ड्यूक का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये वाकई बाप बेटा है? They love one another as men do who want the same place and the same wife. अब यहाँ हमने जिक्र किया था कि वो जो है वो इलीगल चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? दे लव वन अनदर, वो दोनों एक दूसरे से बहुत लाइक करते हैं एक दूसरे को. हु वांट टू द सेम प्लेस एंड द सेम वाइफ, यानी कि उसी सेम जगह पे उन्हें क्या चाहिए? वाइफ चाहिए. शी आल्सो हिंट्स एट द ड्यूक्स इंटेंसिटी ऑफ पर्पस. Black Michael would give his soul to marry his cousin, the Princess Flavia. Over there, even though she has already engaged, I have told you, and to whom she has already engaged, first cousin of Prince, and he was also his fiance. But on the other hand, Black Michael has given the message that he wanted to marry to the Princess Flavia, even though the Princess Flavia was not interested in him. Next. अब यहाँ पे हम we are going to discuss multiple the questions so that whatever we are discussed you will find the answers. But before it, once again मैं थोड़ा सा एक repetition करा दूं, एक आप लोगों का feedback हो जाए. Or once again, those who are listening to me, if they are having any query, they may also write it down. So after reading it, I may have to answer to them. तो जब तक क्वेश्चनिंग नहीं होती, सो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट. क्वेश्चनिंग भी वही होती है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ जाता है, समझ में आने लगती हैं चीजें. तो यहाँ पे हम जो प्रिजनर ऑफ जेंडा की बात कर रहे थे, यानी कि जेंडा का कैदी, और वहां पे आपको मालूम है रेजेंडाइल्स को भी कैद किया जाएगा. और इसके अलावा हमने क्या बात की थी? ये जो हम जगह की बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द इंग्लैंड प्लेस. और यहाँ पे हम रोडोल्फ रेजेंडाइल की बात कर रहे हैं जो कि क्या है? क्लासिकल हीरो है. और वहीं पे ऑन दी अदर हैंड हमने बात की एल्बर्ट की बात की, जो कि क्या है? रॉयल फैमिली से जिसका ताल्लुक है. और रॉयल फैमिली कहाँ पर है? ये रोरोटेनिया पे. रोरोटेनिया क्या है? एक जगह का नाम है. ठीक है. सो एल्बर्ट्स के मुतालिक हमने क्या किया था कि क्लासिकल हीरो रोडोल्फ के मुतालिक हमने क्या किया था कि दैट रिजेम्बलेंस में हमने सिर्फ उसके हेयर की बात की थी. ऑन दी अदर हैंड वी हैव डिस्कस अबाउट द रोरोटेनिया. रोरोटेनिया में हमने क्या जिक्र किया था कि दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी कंट्री इन यूरोप. उसके बाद हमने जेंडा प्लेस की बात की थी कि जेंडा इज द प्लेस वेयर the Rosendale can be what do we say, capture, or the prison can be prisoned over there. Okay, now on the other hand we are talking about the Strelitzia. It is a capital city. और उसके बाद हम आ जाते हैं रोडोल्फ एल्बर्ग 5 पे हमने बात की थी दैट ही वुड बी क्राउन. ठीक है, रोडोल्फ एल्बर्ग 5 हु वुड बी क्राउन. उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंसेस फ्लेविया पे.
कि जो कि वो प्रिंस की कजन भी है और उसकी मंगेतर भी है। एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास ड्यूक है, ब्लैक माइकल है, जो कि हमारा विलन है, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, गवर्नर कर रहा है। स्टर्ली सुब है, स्टेप ब्रदर ऑफ द प्रिंस, यानी कि वो जो प्रिंस की हमने बात की थी, प्रिंस कौन है हमारे पास यहाँ पे, जो कि फर्स्ट कजन है फ्लेविया का, वही प्रिंस है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो इसका कौन है, स्टेप ब्रदर है। ब्लैक माइकल का वो स्टेप ब्रदर है, सुतेला भाई है, और उसको क्या है, इशू ऑफ द मॉर्गेनिक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लैक माइकल ने भी उसकी जो मतलब उसके जो भाई की मंगेतर है, उसने ऑफर कर दी कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सो लेट मी सी व्हाट वुड हैपन. So here we are going to discuss the question, and I hope so that you may easily answer of the question. Who says that no man should pass through Paris without spending 4 and 20 hours there? किसने कही थी ये बात? रजनडाइल्स ब्रदर ने कही थी, रॉबर्ट, रजनडाइल्स सिस्टर इन लॉ रोजेस, रजनडाइल्स अंकल विलियम, और रजनडाइल्स फ्रेंड जॉर्ज। रजनडाइल्स के अंकल ने कही थी ये बात, राइट? ओके, नेक्स्ट. Which of the following is not true about Bertram Bertrand? तो कौन सा इसमें से ठीक नहीं है? Let me see. He was a Ruritanian. He was a versifier. He was in love with Madame de Mauban. He was a Paris correspondent to the critic. So the correct answer is he was a Ruritanian. This is not true. The resting of the answers are true. Next, number 3. फैमिली बर्लिस्टन या रजनटाइल फैमिली एक रहती है। बर्लिस्टन या रजनटाइल फैमिली एक नोबेल फैमिली है। Number 3 is who says about whom that she flies higher than the paper trade. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं who says about whom that she flies higher than the paper trade. Rosendale about Rose, George about Madame de Mauban, C is Bertram about Princess Flavia, and D is Robert about Helga. तो हमारे पास जो मैडम आई थी, मैडम दी मॉबन, so it is all about her. She flies higher than the paper trade. Now number 4. Next. Number 4 is George's comment that royal attentions are hard to resist may not be applicable. A is Antonity with reference to Duke Michael. B is the Rosendale with reference to the Alpha. C is Michael's mother with reference to the late king of Ruritania. D is Rosendale with reference to Princess Flavia. So फिर से सुनो क्वेश्चन. George's comment that royal attentions are hard to resist may not be applicable. जाहिर है कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं होता. The decision which have been taken by them, बस वही decision होते हैं. So D answer is absolutely correct. Rosendale with reference to Princess Flavia. Number 5. 5 में ये क्या कह रहा है? When does Rosendale leave for Ruritania from Paris? So it is the month of March, April, May, and then June. So that is the month of April. Next, number 6. How far away was Zenda from Sturlesu? 10 miles, 30 miles, 50 miles, or 70 miles? So it has been written, and we have also discussed 50 miles. Number 7. Who told the landlady's daughter that
The new king has shaved his beard. Who told the landlady's daughter that the new king has shaved his beard? Resendile, George, Joan, or Bertram? So that the correct answer is B. George. George ने ही बताया था जाके. Now next is number 8. When was the coronation take place? Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday? I think ये तो सबसे ज्यादा easy question है. Everybody knows about it that the answer is Wednesday. Now there is a long prolonged story that what would happen with the Razandile, and then how many problems he has occurred, and then how Black Michael has resist him to do accordingly. वो जो भी चाहता था, जो भी उसके plans थे, but अगर वो उसको नहीं मानता था, so what would be the reaction of him? तो ये सब कुछ अभी तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है दैट द कैरेक्टर्स यू मे नो देयर आर मेनी मोर कैरेक्टर विच यू विल नो अबाउट इट मोर. एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि कुछ इसकी वीडियोस भी हैं which I wanted to share with you but not right now. And then you must be, whenever you are having the time, you must go through it and then you must watch. There are some movie clips as well, so that it would be interesting for you. And once again, if you are having any query regarding this, so feel free to ask me. And I hope so whatever we have discussed over here, you obviously have learned and you must participate. So thank you so much. Have a nice evening. So tomorrow we will meet with a new lecture. Allah Hafiz.